let us continue with circles and let's see what we have done in the last class. So in the last class of the circles, we have discussed the standard form of the circle and we have derived from the standard form, we have derived the general form of the circle. ठीक है ना? From the standard form of the circle, मैंने x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. These things we have done. We have already done this in the last lecture. And we have derived the general form. What is this? The general form. ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. ठीक है, and we have derived this thing, means we have derived from the standard form of the circle where a and b are the centers. लेकिन वही चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सॉरी जनरल फॉर्म में, the general form of the circle is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Center is given by minus g comma minus f and radius is given by root over of g square plus f square minus of c. ठीक है, in terms of, so the thing is the center will be given in this sense, minus of g comma minus f, and we have also, what we have done is we have compared this equation with the general equation of second degree, the general equation of conic. ठीक है ना, जो कि हमने, we have seen this in pairs of straight line, the general equation of the conics, ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So here for circles, what happens, we have seen in circles coefficient of x square and y square are the same. Okay, more specifically coefficient of x square and y square is taken to be 1. Both are the same, but if they are not the same, you are supposed to make them as the same. This is one of the sufficient condition that they are the same. Like I have said, this can also be one equation of circle. Let's say for instance, if you are having this thing x square plus y square, ठीक है, plus 2x plus 2y plus 3 is equal to 0. This is a circle, a simplest form of the circle which you are seeing right now. Here coefficient of x square and y square both are 1. If they are not 1, you are supposed to make this as 1 and then give your answer in terms of the radius, or to find the radius or something, to find the center or radius, you are supposed to make this as 1 and then proceed. Means what I'm trying to say is, suppose if your circle isn't given in this sense, let's say 3x square plus 3y square, ठीक है, 3x square plus 3y square plus 2x plus 2y plus 3 is equal to 0. You are supposed to make this the coefficient of x square and y square to be 1 and then proceed. This is also a circle. This is the sufficient condition. Like I said, coefficient of x square and y square are the same. Here they are the same. So first, to find out the radius and the center, center kya hoga? What is the center? Minus g comma minus f. Do not give the center from here. Make the coefficient of x square and y square to be 1 and then proceed. Means you are first supposed to divide this by the coefficient of x square and y square, because they are the same, so they must be the same coefficient. So 3 and 3 are there, so you're supposed to divide this first. So we have x square plus y square plus 2 by 3x, ठीक है ना, plus 2 by 3y, and then plus 1 is equal to 0. We are dividing this entire equation by 3. Then you are supposed to give the center and radius. So minus g is what? Coefficient of 2x. So what is this? 2 times of 1 by 3, 2 times of 1 by 3, 2 times of 1 by 3 plus 2 times of 1 by 3y. So center is what? Center will be minus of 1 by 3 comma minus 1 by 3 minus g comma minus f. So minus of 1 by 3 comma minus of 1 by 3. And radius is what? You can calculate the radius, g square plus f square minus of c, root over of g square plus f square minus c. And c is what? The modified c, not the main c, not this c. After you simplify this equation, this is your concerned equation next. ठीक है, चलो. Normally what happens? Normally in your exam, you will be getting this form. You will be getting this form, the second form. You are supposed to, they will make you confused. They'll give you the second form. You have to bring it into the standard form and then solve. Or standard form is general form. Means make the coefficient of x square and y square the same, and this is equal to 1. Make it to be 1 and then solve. Chalo, next. And one question also we have done, I think. This was the question we have done in the last class. Acha, there was one more question. है ना? चलो चलो ठीक है. And I think this was the homework question. Am I correct? This was the homework question I guess I gave you. And if two diameters of the circles are 2x minus 3y is equal to 1 and x plus 3y is equal to 5, then find the equation of the circle if the area of the circle is given to be 154 square centimeter. So area of the circle is given and two diameters are given. Two diameters are given in the sense the equations of the diameters are given. ठीक है, तो क्या करोगे?
First, so area is given. First case for the first part. First part says if the area is 154 square centimeter. Area mane pi r square. So pi r square, take the value of pi to be 22/7. If nothing is specified, take pi to be 22/7. If nothing is specified, then take pi to be 22/7. See, 22/7 pi r square. 22 pi r square is what? 22/7 into r square is basically 154. We can definitely find r from here. ठीक है ना? r square बोलो, r square is how much? 50, 154 माने 154 times of 7 and divided by 22. कैसे जाएगा? I think this is directly going it with 7. 7 7 49. R is 7. R is radius. We'll take this distance to be positive. R is 7 in this case. अभी R देखो 7 आ गया. To find any equation of the circle, remember you need two things: center and radius. You have center, you have radius, you can definitely find what is the equation of the circle, right? Abhi kya aa gaya? Radius. We have got the value of radius. Now what is the center? We now find the center. How do we find out the center? By solving these two. By solving these two. Why? Because these two are the diameters, right? The two diameters are given. Any two random diameters like this is given. So wherever the two diameters are intersecting, that is the center. So what I do for center, center is basically what? The intersection point of diameter. Center is the intersection point of diameter. So what I do, I simply find the point of intersection of the two diameters given, means I simply solve these two equations. Okay, I solve these two equations from here. So what I can do is I simply add these two. Here we have 2x minus 3y and here we are having x plus 3y. So I simply add these two. So once you add these two, this will cancel out. So we have left out with 3x and this is 6. So x is basically how much? X is 2. X is 2. ठीक है ना? X is 2. Y बोलो. What is y? I think y is x is 2 ना. तो 2 plus 3y is 5. तो 3y is 3 माने y is 1. है कि नहीं? So therefore we have got the center. What is this center? माने center is given by 2, 1. So we know center, we know radius. What is the radius? 7 units. ठीक है? So now we can definitely find out the equation of the circle. For the first part, we are having x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to r square. R माने 7 square 49. Then further you want to break this thing, you can break this x square like x square plus y square. ठीक है? Here you will be getting 2x 4x minus of 4x, make it minus of 4x, and from here you will be getting minus of 2y. ठीक है ना? And what else you will be getting? You will be getting the constants. Constants are what? 4 and 1. ठीक है ना? Constants are what? 4 and 1. So 5, and there simply take this on the right hand side. So this will become 49 minus 5 माने 44. चलो पार्ट बी बोलो. पार्ट बी. Has anyone solved part B? Circumference बोलो. Circumference क्या होता है? Circumference is 2 pi r. Circumference is 2 pi r. तो 2 pi r is given to be 24 pi. 24 pi. ठीक है? Pi cancels out, and here we have r is basically 12. R is 12 for the second part I'm saying. ठीक है ना? Part B. We are done with part A. So part B say from circumference is given to be 24 pi. We know circumference is 2 pi r. So from which we are getting r to be 12 actually. ठीक है? Sure. So we have got the radius. अभी center तो मालूम है ही. What is the center? Just now we have found the center. What is the center of the circle? 2, 1. Center remains the same ना. Center तो अभी तो same ही है. Simply they have changed the condition. So only radius will change. In the previous case, the radius was 7 for a different condition because the area was 154 square centimeter. So now we have a different condition. Circumference. Circumference is 24 pi. So we have radius to be 12. ठीक है? And center 2, 1. So what is the circle? Circle is, therefore circle क्या बनेगा? Circle is x minus 2 whole square. X minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to r square माने 144. This is the required equation of the circle for the second part. Chalo. Straightforward question. You just need to put the conditions and satisfy and simply see from there. Find the value of r and simply solve from there. चलते आगे.
Chalo, a circle has radius 3 units and center lies on the line y is equal to x minus 1. We have to find the equation of the line if this is passing through 7, 3. Always I'll say that to draw the diagram, because without diagram you cannot solve a particular question in coordinate geometry. At least always draw the diagram for the given scenario, for the given conditions. A circle has radius 3 units. So some circle is there and the center is lying on some line. Which line? This line is x minus y is equal to 1. थोड़ा modify करके अगर लिखोगे तो what is this? X minus y is equal to 1. ठीक है, fine. अच्छा, so we have a circle. Look at this thing. We have a circle in this. There is a circle and the center lies on the line y is equal to x minus 1. Acha, so the line is passing in this way through the center, because the center, they have said the center is lying on the line, on this line, y is equal to x minus 1. चलो ठीक है ना. तो find the equation of the line if it is passing through the point 7, 3. ठीक है, एक सेकंड, ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों बोला है? दिस विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल, नॉट लाइन. Typing error. This will be equation of circle. There is no such line which will pass to 7, 3, and we don't need line in this scenario. We need the circle. Typing error. We have to find the equation of the circle if it passes to the 7, 3 point. Chalo. So this circle, we have to find the equation of this circle. Center malum hai abhi. Center is not known to us. We just simply know that center lies on the line. A particular line is there. So we have a circle. And this circle will further go and pass through 7, 3 point. This much they have given. This circle will further pass to 7, 3 point. It's passing through. They haven't said anything regarding center or something. Okay. So question is, what is the equation of this circle? So once again, whenever they are saying equation, what you need? Center and radius. Radius मिल जाए, center मिल जाए तो हो गया, है ना? So what I do from here? चलो सोचते. What can we do from here? Center, we can take some general coordinate of the center, you know. ध्यान से सोचना, we can take some general coordinate because this is the radius, right? The one which I'm joining over here. Any line which is joining the center and the circumference, this becomes the radius. So this is the radius actually, right? Radius of the circle. Acha, so what I can do, what I'm thinking right now is, we have a general line over here, a line which is passing through the center, which is given by y is equal to x minus 1. So let's utilize this to find out the general coordinate of the center. Means in terms of variable only. See the way of calculation here. What I'm doing is, I'm taking the value of x to be t. So once I take the value of x to be t, y will be what? T minus 1. है ना? Y will be what? T minus 1. So if you take the value of x to be t, so y will be t minus 1. So t comma t minus 1 will be the center. Just I am taking a general point over here. You change the value of t, you keep on getting such centers. You take the value of t to be 1, so you will get one more value of center. है ना? 1, 0 you will be getting. You take the value of t to be 2, 2 minus 1, and simply 2, 2 minus 1. You will get the center. So you will get different centers if you keep on changing the value of t in this case. So a general value of t I have taken. Okay, for x is t, y is t minus 1. A general center we are getting from here. So what is the logic behind this thing? Why we have done this thing? Because circle ka radius is given to be 3 units. So 3 units माने this radius is given to be 3 units, माने this distance is given to be 3 units. ठीक है ना? ये जो distance है ये 3 units है. So what I can do is, I can simply use the distance formula. कि t minus 7 whole square and find the value of t from here. I'll get the center. So t minus 7 whole square plus t minus 1 minus 3, माने t minus 4. t minus 4 whole square is equal to 9. Distance formula, simple distance formula, है ना? Simple distance formula. So t minus 7 whole square plus t minus 4 whole square is equal to 9. So we get the value of t from here. Bolo, what is t from here? What is the value of t? You all tell me what is the value of t from here. Solve this and tell me what is the value of t. Jaldi se.
कोई एक बोल दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हियर। यू आर सपोज टू गेस, यस यस यस, यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी। ये तो पक्का है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी। नहीं, हिट एंड ट्रायल से कितना करोगे? हाउ मच वी कैन सॉल्व यूजिंग हिट एंड ट्रायल? हिट एंड ट्रायल से होगा? हाँ हो सकता है, हो सकता है। पता है कैसे? एक बार जस्ट देख लो, यहाँ से सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व। एक बार हो सकता है हिट एंड ट्रायल से। कैन वी ट्राई? Can we try using hit and try? Definitely, you are supposed to get two values. You can clearly see you will be getting a quadratic. So you are supposed to get two values of t. एक बार hit and trial से देखे, t को एक बार 7 रखो. Put the value of t to be 7. 7 minus 7, because 7 is the simplest possible value for which one of the factors is getting 0. See, 7 minus 7, 0. Plus 7 minus 4 whole square, 3 square, 9. चलो satisfied. माने t7 one possible value. अच्छा, फिर t को 4 रखो. Let's put the value of t to be 4. 4 minus 4, 0. 4 minus 3, 4 minus 7, 9. Once again, 4 minus 7, 3. तो 3 square क्या होगा? 9. अरे -3 होगा, वही -3 whole square is what? 9. So t is what? Once again 4. So two values hit and trial से. ठीक है? Now see, every time this is not possible because here we are getting such equation where we are getting 7t minus 7 and t minus 4 right hand side. By chance, मान लो suppose right hand side we would have got some different value. So definitely that would have not, that this would have not got satisfied. ठीक है ना? Anyways, so we are getting t7 and t is 4. चलो हो गया. So for different centers, we are getting one center is what? For we are getting two centers. For t7, center is what? Center will be, center is how much? 7 comma 7 minus 1. ठीक है ना? 7 comma 7 minus 1 माने 6. And for t is equal to 4, center क्या होगा? 4 comma 4 minus 1, 3. 7 6 and 4 3. So for which you are getting radius is known to you, center is now known to you, you will get two circles of this type. You will get two circles for two different centers. एक के लिए क्या होगा? x minus 7 whole square plus y minus 6 whole square is equal to 9. ठीक है? And second one is how much? Second one is x minus 4 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 9. Two different circles, two different values of t for which you are getting two different circles. So there are two circles possible which will pass to 7 comma 3, and this will also satisfy the given condition. Chalo. We saved a lot of time using by using that particular hit and trial procedure. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये कर लोगे, this you all can do, this you all can do. It's the similar problem, the first problem which we all did today. It's a similar problem. See, we have to find the equation of that circle which is having these two lines as its diameter and its area is 154 square centimeter. So area is given to be the same. This question, area is the same. See, simply what they have done is they have simply changed the two diameters. ठीक है ना? तो वहां से using that formula of area pi r square से you can find what is r. Then simply solve these two, you will get the center. Solve these two diameters, you will get the center. Clear है ना? चलेगा? चलो ये होमवर्क में ट्राई कर लेना प्लीज. सॉल्व दिस फॉर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, व्हाट इज द नोट सेइंग? I have said this thing earlier. Once again, recalling this, necessary and sufficient condition for general equation of
degree 2 to represent a circle is what? Coefficient of x square and coefficient of y square must be the same. ठीक है, मतलब a must be equal to b, ये होना ही है, ठीक है. And the coefficient of xy is 0, that is why this term is absent. तभी ना जाके आपको ये मिल रहा है ना, ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c. Then only you are getting this thing. So coefficient of x square and the coefficient of y square is the same. It may or may not be more 1. अगर 1 है तो बहुत ही अच्छा है, अगर 1 नहीं है, if it is not 1, you are supposed to make it 1. ठीक है, and must be coefficient of xy must be 0 definitely. ठीक है ना. तो कल को आपको यही फॉर्म, दिस फॉर्म इज एक्चुअली गिवन in the questions. This form is actually given in the questions to confuse you. You have to bring into the standard form, general form, जो कि x square means you have to divide by a and then solve. चलो आगे चलेंगे. This is known to you. We have seen this earlier. अच्छा, nature of circles condition ये भी आपको पता है. I think I have given this thing in the last class. Just please confirm. Have I given these points in the last class? एक सेकेंड दिखाते आपको points. हाँ, have I given these points? ये वाले points. The radius of the circle in the real, the circle is real. Confirm कर दो एक बार. I have given ना, तो यही बस है. These are only nature of circles. Once again, I am recalling this thing we have done. कि g square plus f square minus c. You all know that what is the radius? Radius is given by square root of. याद है ना, radius क्या था? Radius is given by radius is given by root over of g square plus f square minus of c. यही तो था. अब g square minus f square, g square plus f square minus c अगर greater than 0 हो जाए तो radius of the circle is what? Real. Finite भी है, real भी है, and the circle is also real. Radius real है तो circle भी real होगा. And if g square plus f square minus c is 0, then the radius of the circle is 0, which means the circle is a point circle. This will be just a point whose radius is 0. And lastly, we have g square plus f square minus c is less than 0, माने radius will be, radius of the circle is imaginary. हो सकता है कि center real हो जाए, but still we cannot draw this in the real plane. We cannot draw such a circle. ठीक है ना. The circle is called an imaginary circle. वो सोच ही सकते हो. फिर चलते आगे. अच्छा आ जाओ नेक्स्ट. ये क्या बोल रहा है? What is this note saying next? If we observe that the general equation of the circle given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c 0 has a 3 arbitrary and independent constants. ध्यान से देखो, g, f, c are known as arbitrary and independent constants. Independent छोड़ो, simple word, arbitrary constants. So you also write down in the most simplest possible manner. Simply लिखो, simply x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 has 3 arbitrary constants, namely g, f and c. ठीक है, namely g, f and c. अभी सुन लो, ध्यान से सुन लो. Later on you will see what is the in class 12 when you learn calculus, you will see what is the what is the benefit of the arbitrary constants and how arbitrary constants will determine the solutions of any particular equation, be it a normal equation or be it a general differential equation, which you will learn in calculus. ठीक है. तो arbitrary constant is what? It's such a constant which can change its value. We cannot say it's a variable constant. There is nothing called variable plus constant. So we'll give it a special name to be, it's given to be arbitrary constants, which can definitely change its value. As you keep on changing the value, this circle will change its shape and size. है ना. ये g, f और c क्या है? g, f and c are 3 different arbitrary constant presents in the circle. ठीक है. So what does this implies? This implies that a unique circle can be drawn with respect to 3 non-collinear points. If 3 arbitrary constants are present, so we can draw a unique circle if 3 points are given. 3 arbitrary constants are given, माने we can draw a unique circle through 3 points. आपको तो खाली यही जानना है कि 3 points are given. भाई 3 points are given likewise. ठीक है ना, 3 points are given. कोई भी 3 points दे दिया जाए तो डेफिनेटली अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन. ऐसे वैसे सर्कल नहीं, माने 3 points आर गिवन, माने ट्राइंगल इज गिवन. वही सोच लो, 3 points माने अ ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीस 3 points.
सोच लो, join this, join this and join this, you will get the triangle. माने 3 points are given, तो passing through 3 points there is always a unique circle. ठीक है, और यूनिक सर्कल माने एक ही सर्कल जाएगा ऐसे. ठीक है, ये फील कर लो कि 3 points is given, so definitely only a single circle is possible through these 3 points, not any more circles, 2 circles or 3 circles. A single circle is possible, a unique circle is possible. Acha, suppose if I ask you the question here, you can clearly see what is the number of constants present. The number of arbitrary constants present are what? G, F and C. ठीक है ना? Acha, can you all tell me what is the number of arbitrary constants present over here? This is also a circle. This is also a circle. ये भी तो एक सर्कल है. तब तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा. Just tell me number of constants. Number of arbitrary constants means, arbitrary means those constants which can change its value. You keep on giving some different values, the constants will change. है ना? G, F and C मान लो, suppose G, F and C are what? Different constants you have seen. मान लो G को 1 दे दिया, F को 1 दे दिया, C को 3 दे दिया. I have given G is 1, F is 1 and C is 3. So you will get a different circle. You take the value of G to be 2, F to be 5, C to be 100. You will get a different circle. है ना? So depending on G, F and C are different circle. हाँ, तो right now you are getting an arbitrary constant. Now see from here, right now you are seeing we are having 4 constants, 4 arbitrary constants. लेकिन ये 4 constants है नहीं. We are not having 4 constants here. In what sense? Arbitrary constants, remember this thing, a very important statement I am giving you. Arbitrary constants are always given after reducing the number of constants present. क्या बोला? Arbitrary constants are always given. माने the number of arbitrary constants are decided after minimizing it. Simple. The number of arbitrary constants are decided after minimizing it. Minimizing the number. Minimize माने after dividing this thing, x square plus y square plus 2g by a plus 2f by a plus c by a is equal to 0. This is itself an arbitrary constant, f by a and c by a. We'll treat this to be itself an arbitrary constant. g by a will itself become one constant. अगर minimize कर सकते हो ना, you are supposed to minimize this and then give the answer. Right now, for this time, at this stage, right now you will face that this statement is not so important, but once you will see that when in class 12th you will be doing calculus section, there is a chapter called differential equations. ठीक है ना? The last chapter of calculus you can say. There you will see the benefit of this thing. Arbitrary constants are always given. The number of constants are decided after minimizing it. Whatever constants are there, minimize it anyhow. If you can minimize, then you are supposed to minimize this thing. ठीक है ना? याद रहेगा? ठीक है, याद ना आए तो लिख लो. G by a, F by a and C by a. Still we are left with 3 constants only in this scenario. G by a, F by a and C by a. Still we are having 3 arbitrary constants. Anyways, right now for the time being you just need to remember this thing कि भाई आपके पास 3 points है, you have 3 points. ठीक है, you have 3 points, so definitely we can draw a unique circle through these 3 points. ठीक है, यही बोल रहा है कि this implies that a unique circle can be determined if 3 non-collinear points, the 3 points are non-collinear. 3 points are non-collinear after you, ठीक है ना? So if 3 non-collinear points are given, there is a unique circle which is passing through these 3 points. चलो खत्म, next आ जाओ. Yes, it is kind of acting as the variable constant, but there is nothing called variable constant. We cannot say it's a variable plus constant. ठीक है ना? हालांकि वो वही है. ठीक है, there is nothing called, you know, these two words are contradictory. You are saying variable plus constant. A thing is either it's a variable or a constant.
ठीक है, बट देर आर इन कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, in constants also there are different classifications of constants. You will learn further. There are arbitrary constant, fixed constant जो कि fixed हो जाता है, once fixed, 1 2 3 4 and so on. You are seeing ना, likewise here itself you see 1 2 3 4 is given, ठीक है ना, 4 and 2 is given. So what are these fixed constants? ठीक है ना, A B C D E F G, 6 numbers are given and 6 numbers are kind of constants only, you are saying, and those are what arbitrary constants. ठीक है ना. अच्छा, फिजिक्स में ये करते हो ना, फिजिक्स में यू ऑल डू ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx, क्या होता है x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही तो करते हो ना. एंड देन प्लस c यू टेक, यस और नो. इंडेफिनाइट में यू विल टेक प्लस c, बट इन डेफिनाइट यू डोंट टेक. हाँ या ना, करते हो ना, जानते तो हो गए. बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स यू ऑल डू इन फिजिक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power of n dx is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. What does this plus c take in? Why we take this plus c? This c is actually an arbitrary constant. You can change this c. You can take different values of c. This will change. क्यों होता है पता है क्यों? Why we are doing this thing? Integration and differentiation are two opposite process. You differentiate this thing. You differentiate this thing. Further, you will get back this function only. You will differentiate this function. इसको अगर differentiate करोगे ना, treating this to be a constant, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरिएबल क्या होगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1, माने x टू द पावर ऑफ n, और प्लस c का ये कांस्टेंट है तो जीरो है, कांस्टेंट है तो वो जीरो है, ठीक है ना, तो प्लस जीरो लिखेंगे नहीं, प्लस जीरो तो जीरो है. एंड दिस विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट आउट विद दिस फंक्शन ओनली, x टू द पावर ऑफ n. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हो ना, जानते हो ना बेसिक कैलकुलस. तो x टू द पावर ऑफ n, we are getting the function here. So actually we take this plus c while indefinitely integrating. The reason because we don't know what constant will get added with the function, because the value of the differentiation of the constant is 0. So we don't know what constant is getting added or subtracted for which this differentiation can change. So that constant can be any constant. मान लो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, you can take any constant. But that is a constant. Some constant might have been there. It might have been 0 also. We don't know. So that's why we take 1 plus c over here, because we don't know what is that constant getting added. Okay? Because the differentiation of constant is also 0. So differentiation of this function, I have said integration and differentiation and are two opposite process of each other. Anyways, ये सब बातें छोड़ो अभी. चलो next. आ जाओ, क्या बोल रहा है? Find the equation of the circumcircle formed by the lines. Two lines are given. एक तो लाइन देखने में लग नहीं रहा है. The first line is a kind of a mixture of line they have given. xy plus 2, x plus 2, y plus 4 is 0 and x plus y plus 2 is 0. ठीक है, तो first one is definitely, the first thing is you should be what? You should be simplifying this. हाँ हो गया, done with this. अच्छा चलो, what are the lines? First of all, you need to look at the lines first. Here we have xy plus 2x plus 2y is plus 4 is 0. मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लियरली सी दिस इज फैक्टराइजेबल, सो वी सिंप्लीफाई दिस. x टाइम्स ऑफ y प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 इज 0, माने x प्लस 2 एंड y प्लस 2, ठीक है, इज 0. चलेगा. तो वन लाइन इज x इज -2 एंड सेकेंड लाइन इज x इज y इज -2. ठीक है, तो वन लाइन इज x इज -2, x -2 माने ये, ठीक है, दिस इज 0 0, ये हो गया x -2, दिस इज -2 0, ठीक है ना. एंड सेकेंड लाइन इज व्हाट? y इज -2, y इज -2 माने ये, दिस इज y इज -2, ठीक है ना. चलेगा. व्हाट इज दिस पॉइंट? -2 -2, ये कौन सा पॉइंट है? विच पॉइंट इज दिस? दिस पॉइंट इज, ये y एक्सिस है, ठीक है. ऑन द y एक्सिस x is 0, so we have 0 -2, ये हो गया. And we have one more line, x plus y plus 2 is 0. X plus y plus 2 is 0. We can clearly see this line is over here.
x प्लस वाई प्लस टू इज जीरो, माने क्या है, ये कौन सा लाइन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज दिस, x प्लस वाई इज -2, है ना। तो अगर डिवाइड मारोगे ध्यान से अगर देखोगे तो व्हाट इज दिस, x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन -2 इज 1। तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ आर नेगेटिव, -2 ओनली, तो डेफिनेटली द लाइन विल बी लाइक दिस ना, ये तो लाइन तो ऐसा ही जाएगा, लाइन तो कुछ ऐसा ही जाएगा, यही तो लाइन है, ठीक है ना, यही तो लाइन है। तो अब क्या करोगे, सो हियर व्हाट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल माने कैसा जाएगा, द सर्कल विल बी लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द डायमीटर एक्चुअली, ठीक है ना, ये डायमीटर बन जाएगा, दिस इज द डायमीटर, द सर्कल विल बी समवॉट लाइक दिस। ये बनेगा सर्कल, एंड दिस रेड लाइन इज द डायमीटर, दिस रेड लाइन इज गिवन बाय x प्लस वाई प्लस टू इज 0। अब कैसे निकालोगे, ये रेडियस निकाल लो, रेडियस कैसा कैसे करोगे, रेडियस वेरी सिंपल थिंग, देयर इज नथिंग टू डू ओवर हियर, वी कैन फाइंड द सेंटर एज रेडियस बहुत इजीली, यहां से आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। ये यहां से लेके ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, चलेगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, ये हो जाएगा यहां से, कर लोगे ना यहाँ से, वन ऑफ यू हैव डन आल्सो, बेकार क्वेश्चन है, कर लो, कंप्लीट कर लो। आंसर इज x, ऑडिटर हैज गिवन x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज 2, √2 होल स्क्वायर, वही वही आएगा, रेडियस इज √2। व्हाट इज द सेंटर, हाँ, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सर्कम सर्कल है, तो ये क्या है, सर्कम सेंटर, व्हाट इज दिस, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर माने ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज द सर्कम सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यस और नो, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, हाइपोटेन्यूज, ये -2 है, 0 है, ये क्या है, 0 -2, तो आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से, मिड पॉइंट क्या होगा, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस -2 माने -0 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्या होगा, -1 कमा -1, सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो क्या कर लोगे, यू कैन फाइंड द रेडियस, रेडियस क्या होगा यहाँ से, आई थिंक रेडियस इज √2, रेडियस आएगा यहाँ से √2, ये यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम ही होगा, रेडियस इज √2, ठीक है ना, रेडियस फाइंड कर लोगे, चलेगा। अभी सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या आएगा, रेडियस इज √2, सेंटर आएगा -1 कमा 1, -1 कमा -1, सो देयरफॉर सर्कल क्या आएगा, सर्कल इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x प्लस 4y is equal to 25 and 3x plus 4y minus 61 is equal to 0 are two tangents of a circle, then find the equation of a circle। अच्छा, so we have two lines are given, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो two lines are parallel lines, can you see that the two lines are parallel lines, हाँ या ना, so two parallel lines are given and those two parallel lines are two tangents of a circle, माने kind of this way, one circle is there and two parallel lines are in this sense, समझो ना, these are two parallel lines, ऐसे है, चलेगा। The first observation whenever you see two lines are given, first thing is these two lines are parallel lines, nature देखो, nature क्या है, parallel lines, these two are parallel lines। अच्छा, we have to find the equation of the circle, कौन सा circle, ये वाला circle, the line circle which is there in between these two lines, ठीक है, कैसे करें, तो एक चीज तो ये चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डायमीटर, this is the diameter 2r, this is the diameter 2r, and the diameter is basically the distance between two parallel lines, yes or no,
The diameter is basically nothing but the distance between two parallel lines, and the distance between two parallel lines is known to us, है ना? याद है? Mod of C1 minus C2 divided by root over of A square plus B square. Remember? Distance between parallel line 2r. 2r क्या है? 2r is basically the gap between, या फिर distance between parallel lines. Standard language में distance between parallel lines. Between parallel lines. फॉर्मूला याद है? C1 minus C2 mod C1 minus C2 divided by root over of A square plus B square. This was the formula. मतलब क्या है कि mod C1 minus C2, तो C1, इसके लिए C1 क्या है? C1 is basically minus of 25, ठीक है, और माइनस ऑफ माइनस 61 अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, आपको अगर याद होगा, डू यू ऑल रिमेंबर दैट वी हैड टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड सेम, एंड देन वी वुड हैव गिवन दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला. ठीक है, पैरेलल लाइंस तो सभी होते हैं पैरेलल लाइंस, बट यू आर सपोज टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सेम एंड देन गिव दिस फॉर्मूला. आई हैव सेड दिस थिंग. We use this formula after making the coefficient of x and y same. माने यहां पे एक अगर ax plus by plus c है, ठीक है, दूसरा अगर 2ax plus 2by plus 2c है, या फिर c है मान लो सपोज, ठीक है, ये c1 है, ये c1 मान लो, ये c2 मान लो, कांस्टेंट तो चेंज होता है. These two lines are parallel lines, but the thing is you are supposed to make the coefficient same. Make the coefficient same means divide this by 2 and then give the answer. फिर आपको ये करना है, then you have to use this C1 minus C2 divided by root over of A square plus B square. Anyways, ये सब चीजें, these are not new to me. I have said this thing earlier as well. अच्छा, so we find this thing. What is this? We find 2r. We'll get what is r from there. अच्छा बोलो 25 माइनस ये क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस 61 माइनस 25 कितना आ रहा है बोलो? है ना 61, काफी कुछ आ रहा है भाई. 61 माइनस ऑफ, है ना 61 माइनस ऑफ 25 माने दिस इज 36 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ, तो 36 अपॉन 5 ये आ रहा है. 2r is 36 upon 5. Odd kind of value. 2r is 36 upon 5. So r is how much? R is 18 by 5. R is 18 by 5. तो रेडियस आ गया, चलो ठीक है, रेडियस आ गया तो आ गया. We have got the radius next. So we have got the radius. रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर भी आपको मिल जाएगा. डायमीटर was 2r, डायमीटर is 36 by 5 and radius we have got. अच्छा, radius. Now how do we find out center? Because to find the equation of the circle we need center and radius also. ठीक है ना, center and radius also. सेंटर तो चाहिए, रेडियस भी चाहिए. अच्छा क्या करें? व्हाट टू डू नेक्स्ट? सेंटर तो चाहिए ना. अच्छा, वन थिंग वी कैन डू नाउ, रेडियस इज नोन टू यू ना, रेडियस इज नोन टू यू. सेंटर को सपोज मान लो, सपोज यू टेक द सेंटर टू बी HK. Suppose what I'm thinking right now, take the center to be HK. So from this HK point, you are going some, how many units upward? 18 by 5 units upward, because radius is what? 18 by 5. 18 by 5 units upward. है ना, मानते हो? अच्छा, आप एक काम करो, सपोज आई टेक दिस लाइन टू बी, ये एक लाइन ले लो, हमने दो लाइन लिया ना, वी हैव टेकन 2 लाइन्स. तो ये एक लाइन कौन सा लाइन है? मान लेते हैं कि सपोज दिस लाइन इज 3x plus 4y is 25 एंड दिस लाइन इज 3x plus 4y is 61. ठीक है, दो लाइंस मान लो यहां पे. अच्छा, these two lines, सेंटर से द लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. these two lines are perpendicular. तो अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? द स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होता है? द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माने माइनस ऑफ 3/4. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4/3. ये स्लोप क्या होगा? 4/3. ठीक है ना, मानते हो? ये वाला स्लोप क्या होगा? 4/3, स्लोप ऑफ दिस लाइन. ठीक है,
तो स्लोप आ जाएगा मैंने टेन थीटा इज 4/3, है ना। स्लोप आ जाएगा मैंने टेन थीटा इज वॉट 4/3, स्लोप मैंने तो वही होता है टेन थीटा इज 4/3, टेन थीटा इज 4/3, ठीक है। अच्छा, टेन इफ टेन थीटा इज 4/3, ध्यान से सोचो, आई एम ट्राइंग टू यूज, कैन यू थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पोलर नहीं, क्या बोलते हैं उसे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आई एम ट्राइंग टू यूज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, वी आर ट्रैवलिंग 18/5 यूनिट्स अपवर्ड, ठीक है। तो वो क्या होता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय h प्लस, लेट्स से द कोऑर्डिनेट, गिवन कोऑर्डिनेट इज व्हाट h के, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट h प्लस r cos थीटा, यस और नो, h प्लस r cos थीटा एंड k प्लस r sin थीटा, याद है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर अ स्ट्रेट लाइन। तो can we figure out if you have got tan theta, so by triangle can we figure out, see tan theta is 4/3, tan theta is 4/3, so what is sin theta, sin theta will be 4/5 and cos theta is what 3/5, मानते हो कि नहीं, ट्राइंगल से tan theta is 4/3, तो sin theta is 4/5, cos theta is 3/5, हाँ या ना, ठीक है, ओके। So we have got this thing, sin theta and 4/5 and cos theta is 3/5. So definitely we can find out this coordinate, this coordinate will be, this coordinate will be h plus radius was what 18/5 ना, तो h plus 18/5 r cos theta माने 3/5, ठीक है ना, and this coordinate will be k plus r 18/5 sin theta 4/5. Similarly, you all know the sign convention, from hk we are going down next, नीचे जाओगे तो this point will be what h minus same thing but this will come up with a minus sign, yes or no, same thing but this will come up with a minus sign, हाँ या ना, तो h minus 13/5 into 3/5 and k minus 13/5, not 13, sorry, this was 18/5 18/5 into 4/5, ये चीज आएगा ना, yes or no, so now we have got two coordinates of what x and y, हाँ या ना, we have got two coordinates of x and y. तो अभी next what you are supposed to do, you will take these coordinates and put it over here, माने यहाँ पे रखोगे, ये कौन सा लाइन है 3x plus 4y 61 पे रखोगे, एंड फ्रॉम हियर आल्सो यू विल पुट 3x plus 4y is 25, यहाँ पे रखोगे और क्या करोगे, यू विल सॉल्व फॉर h and k, समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, you will take these coordinates and put it on these lines, 3x plus 4y 61 and 3x plus 4y is 25. After putting this into the line, माने this will make these coordinates to be satisfied. After satisfying, you will solve for h and k, you will be getting two relations in terms of h and k, from there you can solve, कर लोगे, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, अरे you have got these points ना, you have got these points, this point and this point, you will take this and make it satisfy on these lines, but simply take this and put it over here, 3x plus 4y is 61, because this point is lying over here na, on this line. Similarly, take this and put it over here in the place of x and y. So after making it satisfying, what you are supposed to do, you're going to solve for h and k, you will be getting two relations in terms of h and k, and solve for h and k from there itself. Got it? ठीक है ना, कर लोगे, एक तो लेंदी तो है यहाँ से, it is lengthy because the points are lengthy in this case. What I was thinking, but still this is actually a very, very bad process to proceed in this way.
what I was thinking, what else we can do? Let's think in some different process. Okay, I mean, let's remove these things over here. Let's think in some different process. Let's see what else we can do. This is fine, but this is a kind of a lengthy process. The one which I said, like right now, this is the thing which is striking. What else we can do? Let's think of क्या करें. अच्छा, one thing we can find, one thing we can find, one thing we can definitely find over here is, can we find out what I am thinking once again? What I am thinking right now is, we can find one line which is parallel to both these lines and which is passing through the center. Mane kind of the line which is the diameter. The diameter also, the line, this red line is parallel to these two yellow lines, right? Okay. Because this line is parallel to these two lines, the equation of this line will be 3x plus 4y is equal to lambda, right? Yes or no? कोई तो कांस्टेंट ही होता है ना, कांस्टेंट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय लैम्डा, वही तो करते हो, कांस्टेंट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एंड देन वी सॉल्व. Constant simply gets replaced by lambda and then we solve that lambda by some given condition. We solve that lambda. One unusual thing I'll say from here, which is a very nice observation kind of thing you can see. ध्यान से सुनना. This is 3x plus 4y is equal to lambda is any line which is parallel to this line, because the constant simply changes in a parallel lines. The coefficient remains the same. So I have taken this line which is passing to the center and kind of it is acting as the diameter. It is the diameter. ठीक है ना? तो diametric line है, ये एक diametric line है. It's a diametric line. So, but because this line is parallel to both the two lines, 3x plus 4y is 61 and the second line 3x plus 4y is 25. ठीक है? यहां से कोई एक कंडीशन देखो, सेंटर तो है नहीं, ये तो मानना है कि सेंटर है नहीं, सेंटर ही आपको निकालना है, तो वी डोंट हैव द सेंटर. अब सोचो वन थिंग, वन किलर विजुअलाइजेशन, ध्यान से देखो. 3x plus 4y is 25. Look at the difference between the constants. Just carefully look at the difference between the constants. What is the difference between the constants? 61 minus 25 is how much? 36, right? It's 36. ठीक है ना? 61 minus 25 is 36. This red line is actually equidistant from both the lines. ठीक है? The red line is actually equidistant from both the lines. So kind of the three lines are in AP, you can say. ध्यान से सुनो, the constants are in AP. The three lines, if the lines are equidistant, ठीक है ना, then the basically it is in AP. वो AP में आ जाएंगे. AP means 61 minus 25 is 36. 36 divided by 2 is how much? 18. मानते हो? 61 minus 25 is 36. 36 divided by 2 is 18. 18. So 25 plus 18 will give you this line actually. 25 plus 18 units will give you this line. How much is it? 25 plus 18 is how much? 43. हाँ या ना? देखो डायरेक्टली लाइन ही आ गया. न्यू कंसेप्ट विच आई एम गिविंग यू, इक्विडिस्टेंट अगर लाइन हो जाए, इफ द लाइंस आर इन इक्विडिस्टेंट, लिसन, इफ द लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, the red line is at the same distance as the two yellow lines, then the constants will be in AP. You can directly determine the line which is diametric line actually, which is passing through the center. ठीक है ना? एक 3x plus 4y 25 है. What I have done, AP होता क्या है? What is this? AP है ना 25, 43 and 61 at a 16 distance, 18 distance, sorry. हाँ या ना? समझ पा रहे हो what I'm trying to say? Yes or no? Obvious बात है. It's a kind of very obvious thing. Getting my point? Yes or no? ये 25 plus 18 करोगे 43 आएगा. 43 plus 18 will give you 61.
चलेगा? सो इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू प्रोसेस ओनली, ठीक है। बट द थिंग इज, व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? वी डोंट हैव एनी बेनिफिट, राइट? वी डोंट हैव एनी बेनिफिट हियर, ठीक है ना। यहाँ से तो यू आर गेटिंग अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, बट देयर इज नो बेनिफिट बिकॉज सेंटर इज नॉट नोन टू यू। वही तो चाहिए, सेंटर इज नीडेड ना, तो सेंटर इज नॉट नोन टू यू, ठीक है ना। यही तो पता है नहीं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से आएगा नहीं, मतलब वही प्रोसेस ठीक रहेगा, दैट इज द प्रोसेस ओनली, दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन मुझे आपको एक चीज ये बोलना है कि वन थिंग विच आई नीड टू से फ्रॉम यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच आई नीड टू से इज, you will you will see that after, even if you put these 2 points, even if you put these 2 points now, even if you put these 2 points, this point and this point in these two equations individually and solve for h and k, you will see that h and k will have infinitely many solutions. You won't be getting h and k explicitly, you will never get h and k explicitly, you will never find the value of h and k, you will see there will be infinitely many solutions. अब आप बोलोगे क्यों? Because between two tangent lines there are infinitely many such circles possible. What I'm saying is, between these two parallel lines there is a circle which is given based on this condition. I am now saying that even if you solve in this sense ki after taking h and k, you are finding these coordinates. Which coordinates? These coordinates, these coordinates, this coordinate and this coordinate. After finding these two coordinates, I am saying ki ye leke you make it satisfy on this line, mane make it, and simply put the value of x and y to be these points and then simply solve for h and k from there, hai na? I have said this previously. Even if you do this thing, you will see there are infinitely many solutions. There are infinitely many solutions you will see from here. करके आप चेक कर सकते हो. There is a reason for it. The given information is insufficient actually, not many things are given. Uniquely center you will never be able to find. Uniquely there won't be any center because between two parallel lines there are infinitely many such circles possible. ठीक है, ये जो डायमेट्रिक लाइन दिया है ना, डायमेट्रिक लाइन, you will see that along this diametric line, there are infinitely many such circles possible. ऐसे ऐसे there are infinitely many such circles. कैसे जाएगा पता है? ऐसे likewise ये there are more such circles of this type. Many such circles are possible. जहां पे ये रेडियस तो सेम मिलेंगे आपको, रेडियस यू विल गेट द सेम, रेडियस यू विल गेट द सेम, ठीक है। तो यहां पे इनफाइनेटली मेनी सच सर्कल यू विल फाइंड फ्रॉम योर, ठीक है ना, इनफाइनेटली मेनी सच सर्कल्स यू विल फाइंड फ्रॉम योर, चलेगा ना। तो हियर there are certain informations missing by which you can determine the unique center. Certain informations are missing by which you can determine the unique center. सब कुछ आपको मिल जाएंगे यहां से, but there are certain informations missing from here in this question by which we can determine the unique center from here. माने कोई एक unique circle which will give you a unique center. A unique circle will have its a unique center. ठीक है ना? तो certain informations in this question is missing. But right now मान लो, अगर सपोज मान लो अगर आपको एक जनरल देना है, जनरल सपोज यू वांट टू गिव इट अ जनरल सर्कल, तब कैसे दोगे? जनरल सर्कल वुड हैव बीन अ जनरल सेंटर, मान लो एच के, यू टेक इट अ जनरल सेंटर, एच के बी द जनरल सेंटर एंड एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, ऐसे दे दोगे. वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर माने 18/5 होल स्क्वायर. There is one more question of this type. There you'll see. I think I've added one more question of this type. There is one added information. The main thing which I need to show from here was this particular short trick also. You can see between any two parallel lines, if the two lines are equidistant, ये distance और ये distance अगर same है, these two distances are the same, माने red line is equidistant to both the lines. ठीक है, तो वो mid line है, kind of mid line. So this mid line
and the two remaining three lines, basically all three lines will be in AP. ये समझ लो, three lines will be in AP. Constant तो same ही है, sorry, constant coefficients of x and y remains the same. बाकी वो AP हो जाएंगे. This will become AP. Only constants will change, nothing else. Only constant. Make sure the coefficient of x and y are the same because the two lines are parallel line, three lines are parallel line. And वो जो diametric line होगा, the diametric line will be actually the mid line. And how you can find this thing? ये difference देख लो, 61 minus 25. 61 minus 25 is what? 36. 36 divided by 2, 18. So 25 plus 18 will give you 43. ठीक है ना? चलते आगे. Next. The equation of the circle concentric with the circle x square plus y square minus 6x plus 12y plus 15 is 0 and double its area. अच्छा, first of all in this scenario क्या चाहिए? What they are asking for? Equation of the circle concentric with the circle. Concentric माने circle having same centers. जानते हो ना? Concentric circles, circle having same centers. तो equation of the circle concentric with which circle? This circle. X square plus y square minus 6x minus 12y plus 15. पहले तो सर्कल देखोगे, सेंटर बोलो. यहां से सेंटर बोल सकते हो, सेंटर बोल सकते हो, सेंटर बोलो. माइनस जी का माइनस एफ क्या होता है? हाँ, 3 माइनस 6. बहुत अच्छे. 3 माइनस 6 सेंटर होगा. सेंटर सेंटर लिख देते हैं. माइनस जी का माइनस एफ इज 3 माइनस 6. 3 माइनस 6. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां से माइनस है. माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस. माइनस 2 इंटू 3 है ना? दिस इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 मैंने प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3. तो वो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहां पे. So we have a circle whose center is at 3 minus 6. 3 minus 6. अच्छा, चलेगा. And we have to find the equation of that circle which is concentric with this circle and double its area. So given circle is a concentric circle. Now concentric circle can be of two types. This can be inside this circle or outside this circle. कहाँ होगा? This concentric circle, they are having the same center now. The concentric circle could have been here also, could have been here also, like this. Which case, which one should I take, inside or outside? How can we find? How do we know which one to take? They have specifically mentioned double its area. One of the concentric circle which we need to find has more area. One of the bigger circle we have to consider, not the smaller circle. So not the inner circle, the outer circle we need to consider. है ना? Double its area. The area is getting doubled, more area than the given circle. So this white circle का equation we have to find. ठीक है? तो कैसे करें? ये रेडियस बोलो पहले. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दिस रेडियस. व्हाट इज दिस रेडियस? ये रेडियस भी बोल दो. व्हाट इज दिस रेडियस? कैसे निकालोगे रेडियस? वही फॉर्मूला जो होता है. रेडियस, रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ गिवन सर्कल. रेडियस इज येलो सर्कल. येलो सर्कल का रेडियस क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, which is root over of 9 plus 36 minus of c. c बोलो तो 15. ठीक है ना? 36 plus 9 45. 45 minus 15 30. root over of 30. ये रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ दिस. रूट ओवर 30. रूट ओवर ऑफ 30. ठीक है ना? एंड लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल टू बी r. ये मान लेते हैं कि कैपिटल R है. सपोज रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल वी आर सपोज टू फाइंड, लेट्स से R. ठीक है ना? तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेडियस? अभी डबल इट्स एरिया बोला है ना. तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल्स रेडियस इज नोन टू यू. स्मॉलर सर्कल्स रेडियस इज नोन टू यू. रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज एक्चुअली डबल इट्स एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो एरिया कंसेप्ट ही यूज कर लो. पाई आर स्क्वायर, pi r square is basically double the area of smaller circle. Double the area of smaller circle. 2 times area of smaller circle. Root 30 whole square. By the given condition. From here you will get what is r. मानते हो ना? From here you will be getting what is r. So what is this? Pi cancels out. So r square is how much? R square is 2 times of 30, which is actually 60. R square we have got.
The center is known to you. Center is the same for all. Center is known to you. So definitely we can find the equation of the circle. Now radius is known to you. Let this to be r square only, because in the equation of the circle we need r square. तो इसको r square ही रहने दो. So therefore equation of circle is क्या, x minus 3 whole square plus y plus 6 whole square is equal to r square बोले तो 60. This is the equation of the concentric circle, bigger circle. ठीक है ना? This is the equation of the bigger circle. लिख लो. आ जाओ. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Find the equation of the circle concentric with, once again, concentric circle. Concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to 0. And perimeter of the semicircle is 36. Chalo, perimeter is given this time. ठीक है ना? Perimeter of the given circle is 36. Acha, one thing to see from here. Just before I proceed with this question, one thing to see from here. This previous question, just now we have solved this previous question. We have got a circle. ठीक है ना? अच्छा, ये जो सर्कल हमें मिला है ना, दिस सर्कल, ध्यान से देखो. इफ यू ब्रेक दिस थिंग, इफ यू ब्रेक दिस सर्कल, इसको अगर खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9, और इसको अगर खोलोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 is equal to 60. And post which you simplify this thing. So what you will get from here? X square plus y square plus minus of 6x plus 12y. Okay. And 36 plus 9. Whatever is this thing means 60 minus whatever is the constant. Just look at this thing. 60 minus 36 minus 9. Leave out the constant. Look at this part only. Can you see this thing? X square plus y square minus 6x plus 12y was actually there in the given circle also. Was actually there in the given circle also. ठीक है, मतलब इतना सब कुछ ना करके, so much of things, we can directly do one thing. It is very easy to write down the equation of the concentric circle. You know, only the constant will change. The rest of the things remains the same. X square plus y square minus 6x plus 12y plus lambda is equal to 0. Lambda will come from where? From here, from the given condition. Means so much of things you need not do. Center निकालो, radius निकालो, center is the same. So many things you are doing. ठीक है ना? Directly you will come into this conclusion. Equation of concentric circle is very easy. कि यहां तक same होगा till here. Only the constant will change. Plus lambda is equal to 0. Lambda will come from where? Lambda will come from here. From this given condition. चलो देखते. One more question based on this only. We will directly now do. We won't do so much of things. देखो, find the equation of the circle concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to 0. ठीक है ना? Now we have a given condition also. Perimeter of a semicircle is 36 or something. ठीक है ना? ये condition दिया गया है. तो first of all, equation of concentric circle will be the same. Same ही आएगा. 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to 0. मतलब same, मतलब constant तक. ये गिवन सर्कल है, सॉरी ये कांस्टेंट डायरेक्टली लिख दो, टाइम क्यों वेस्ट करना. 5x माइनस 6y, ठीक है ना? माइनस 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. लैम्डा विल कम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द गिवन कंडीशन. ठीक है, लेकिन वन थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, ऑलवेज कन्वर्ट दिस थिंग, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द रेडियस ना, रेडियस ऑफ द सर्कल. वो रेडियस तो डिफरेंट होगा ना, radius of the concentric circle will be different. So to find that radius, you should always convert this, because this is not in the converted form. ये convert कर लो. You should always convert this. ठीक है ना? आप तो जानते ही हो, we all keep this to be 1. The coefficient of x square and y square is 1. है ना? Anyways, तो ये चीज आपको मिलेगा. अच्छा, next what we do after this, we use the condition to find the value of lambda. या फिर लैम्डा बाई 3 मान लो. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाई 3 वी यूज द कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? वी नीड रेडियस. ठीक है ना? तो रेडियस आपको मिल जाएगा यहां से. कैसे मिलेगा? वी फाइंड द व्हाट दे हैव गिवन. पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 36. तो सेमी सर्कल माने ये, तो पेरीमीटर मींस ये 2r
total is 2r, ठीक है, चलेगा, and the remaining part is what, pi r. Full circle is basically, full circle का circumference is what, 2 pi r. Half circle का circumference is what, pi r. तो pi r plus 2r. So what is the perimeter? Perimeter of semicircle is what, pi r plus 2r. For full circle the circumference is what, 2 pi r. So for half circle is what, pi r, and plus the diameter which is 2 pi r, 2r, sorry, r plus r which is 2r. So perimeter माने the sum of all these, तो pi r plus 2r. तो pi को आप 22/7 ले लो, take the value of pi to be 22/7, 22/7 मान के ही solve करो, and this thing is given to be what, 36, ठीक है ना. तो 22/7, if nothing is mentioned then take it to be 22/7 and then solve. So 22/7r plus 2r is given to be 36. चलेगा. बोलो यहां से r क्या आ रहा है, what is the value of r, जल्दी बोलना. What is the value of r from here? You can take out r common and simplify. Take out a 2 common also. 2 भी आ जाएगा, ये 2 11, ठीक है ना, और ये 18. अब बोलो क्या आ रहा है, 11/7r. Take r common, 11/7 plus 1 is equal to 18. So what is this, 18/7, 18 cancels out, so r is 7. Radius आ गया, देखो, we have got the radius, we have got the radius, ठीक है. अब रेडियस वाला फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या चाहिए, लैम्डा ही चाहिए ना. वी वांट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, रेडियस वी हैव गॉट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, जी स्क्वायर, क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, 25/9, 36, सॉरी 25/36, है ना. सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर फॉर दिस सर्कल, 5/6, 2 into 5/3 into 2, इसलिए 5/6, तो 25/36, ठीक है ना. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर क्या है, 1, 1 square 1, and minus of lambda by 3 is equal to how much, r square. रूट ओवर को r square ले लो, r square is what, 49. बोलो यहां से सॉल्व कर लोगे, यहां से सॉल्व फॉर lambda by 3 only and simply search solve for lambda by 3 only, ठीक है ना, वही से देख लो. Solve for lambda by 3 and put it over here. Solve for lambda by 3 and simply put it over here. So finally we'll get this result, x square plus y square minus 5/3x, ठीक है, minus 2y plus lambda by 3 जो भी होगा, that is the equation of the concentric circle. ये फाइंड कर लो जो भी होगा, फाइंड lambda by 3 from here and put it over here itself. ये तो कर लोगे, आगे कैलकुलेशन ही है बस. So it's easy to find the equation of the concentric circle, right? It's easy to find the equation of the concentric circle. आगे का सिर्फ कॉपी कर लो, बस वही है. Previous question seems simpler. Which question? This one. हाँ, condition was simpler ना. Condition was simpler. Condition was simpler. आगे का खाली ये कॉपी कर लो, the same, the remaining part is the same. आगे का खाली कॉपी कर लो, माने 5x minus 6y. You simply need to copy till there. Post which we have -14. वो -14 कॉपी नहीं करना, प्लस लैम्डा लिख दो, प्लस लैम्डा, because the constant will simply change. Just to find the center, for the sake of writing the center and all, I am dividing this by 3 because this equation was not given in the standard form. So I'm bringing into the standard form, I'm bringing in terms of making the coefficient of x square and y square the same. तो ये बन जाएगा, ठीक है. तो यहां से आपको सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा,
ठीक है, and from the given condition we'll get the radius, from the given condition we'll get the radius. डेटा वो पता नहीं, डेटा वी डोंट नो. Some bad values will be there, you can clearly see 25 by 36 plus 1. Obviously you will getting a very bad type of answer because we have 249 is there na, 49. So minus of 49 times of 49 times of 36, so obvious reasons you will be getting a very bad value only. ठीक है, obvious reasons. Anyways, leave out. You can leave the calculation as it is and simply replace the value of lambda by 3 by this value. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. Next question is find the equation of the circle touching the lines. The two lines, can you see the two lines? Two lines are parallel once again. Look at this, two lines. Look at these two lines. The two lines are what? Parallel lines. तो वही वाला सिमिलर वाला क्वेश्चन पता है ना, वो वाला सिमिलर क्वेश्चन है ना. Just now we have solved. The center was not uniquely found. And the center, now see the center, they have said the center is lying on the line 2x plus y is equal to 0. अब देखो center, they have specifically said the center is lying on which line? 2x plus y is equal to 0. Two lines are parallel, the third line is not parallel. ठीक है, the two lines are parallel but the third line is not parallel. चलेगा. अच्छा क्या करोगे, एक और लाइन है, one more line is there, 2x plus y is equal to 0. So 2x plus y is equal to 0. अच्छा भाई, the third line is neither, see in this universe two lines are either parallel lines or intersecting lines. ठीक है ना, बोर्ड पे या फिर पेज पे you draw any two lines, the two lines will be either, the two lines can be drawn as parallel lines or could have been drawn as intersecting lines, और तो कोई लाइन बनेगा ही नहीं. ठीक है, so considering the third line is intersecting lines, so the third line is what? Such a line on which the center is lying. माने this is the center, the line, अब देखो लाइन तो they haven't said कि लाइन तो ऐसे ही बनेगा, लाइन परपेंडिकुलर है, ये तो है नहीं, line is perpendicular, they haven't said. We can definitely see also the two lines are not perpendicular. ठीक है, the two lines are also not perpendicular, so definitely the line would have been something like this, tilted type like this. ऐसे 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 जाएगा, ये टिल्टेड लाइन कुछ ऐसा है. ठीक है ना, चलेगा. तो अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स. वैसे भी आप देख सकते हो, वैसे ध्यान से देखो, सी वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट दीज पॉइंट्स. ये पॉइंट बोलो कैसा होगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस पॉइंट, हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस पॉइंट, बोलो. We have two lines. I have taken this line to be 4x minus 3y is minus 30 is 0 and this line to be 4x minus 3y plus 10 is 0. This line is given to be 2x plus y, 2x plus y is equal to 0. तो क्या करोगे, satisfy करवा दो, solve करो, solve these two simultaneously. ठीक है ना, solve these two simultaneously. तो बोलो ये पॉइंट क्या आ रहा है, what is this point? ये 2x रखो, यहाँ पे 2x रखो, मल्टीप्लाई दिस बाई 2, तो दिस विल बिकम 4x प्लस 2y इज 0. तो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग, 4x सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 3y माइनस 5y. ठीक है, तो माइनस 5y इज बेसिकली माइनस 10, तो y विल बी 2, y 2 आ जाएगा. इफ y is 2, what is 1, x, what is x, x will be 2x is minus 2, x will be minus 1, minus 1 comma 2 आ जाएगा. Similarly you tell me this point, you tell me this point, what is this point, बोलो ये point क्या क्या होगा, how much is this point, 3 comma minus 6, सही है ना, 3 comma minus 6 चेक कर लेते, चलो 3 comma minus 6 you are saying 2 into 3, हाँ ठीक ही है, getting satisfied. चलो पॉइंट आ गया, 2 points we have got. This red point is just the midpoint of these 2 points. तो ये midpoint बन जाएगा, ये midpoint बन जाएगा. This is the midpoint of these 2 points. 3 plus minus 1 divided by 2 and 2 plus minus of 6 divided by 2. आप चेक कर सकते हो, you can check this thing. ये क्या होगा, what is, how much is this point? This point is 2 by 2 माने 1
1 comma this is 2 minus 6 माने minus of 4 by 2 which is minus of 2. तो 1 comma minus 2. देखो 1 comma minus 2 we are getting the midpoint. ये point center आ गया. Center is basically 1 comma minus 2. If this is true, then definitely this will satisfy this line which is passing through the center, the diametric line. Diametric line is also parallel to these two lines. And what is the equation of the diametric line? Just like that previously. बोल सकते हो क्या होगा? डिफरेंस देखो कांस्टेंट का. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट? ये जो एक लाइन कौन सा लाइन है? दिस लाइन इज 4x minus 3y is minus 10 and this line is 4x minus 3y is equal to 30. अब डिफरेंस देखो. डिफरेंस क्या होगा? -10 minus 30 minus 40. ठीक है, या फिर वैसे भी देख सकते हो 30 minus 40, 30 minus minus 10. डिफरेंस क्या है? 40. 40 by 2, 40 by 2 20. मानते हो ना? अच्छा 30. ये देखो 30 to minus 20 minus 10 it's going right. तो 30 minus 20 will give you how much? 10. Yes or no? So this line will be 4x minus 3y minus of 10 is equal to 0. नहीं समझे? Getting my point? What we have done over here? Yes or no? सोचो. अरे उड़ गया रे. Are you getting my point? What I'm trying to do? Yes or no? ये वाला पार्ट क्लियर है? Once again, अरे देखो डिफरेंस वी हैव सीन ना, वही वाला शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली. एपी में 3 लाइंस आर इन एपी. इक्विडिस्टेंट है. इफ दीज आर इन इक्विडिस्टेंट सो दीज आर इन एपी. 30 minus 10, 30 minus minus 10. डिफरेंस देखो कांस्टेंट का. 30 minus minus 10. कोएफिशिएंट सेम है ना? 4x minus 3y, 4x minus 3y. चलो डन. 30 minus minus 10, 40. 40 by 2 20. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? 20. तो 30 minus 20 देखो ना, 30 से -10 हो रहा है. 30 to -10 इट इज डिक्रीजिंग ना, डिक्रीज हो रहा है ना. 30 to -10 डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज 30 minus 20 इज व्हाट? 10. 10 minus 20 इज -10. देखो ये लाइन मिल जाएगा आपको. क्लियर है? 4x minus 3y is 10. दिस इज द लाइन. अच्छा क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है ये लाइन में? इज 1 comma minus 2 satisfying this line? हाँ या ना? इज 1 comma minus 2 satisfying this? देखो अगर सही है, if our calculation is correct, so 1 comma minus 2 will satisfy this line. Yes or no? satisfy हो रहा है क्या? 4 into 1 minus 3 into minus 2 हो रहा है. 10 आ रहा है. यू आर गेटिंग 10. तो मतलब ये सही है. शॉर्ट ट्रिक इज ऑल्सो फाइन. बताओ क्लियर है? ठीक है ना? जो शॉर्ट ट्रिक दिया है दैट शॉर्ट ट्रिक इज करेक्ट ओनली. एनीवेज वी हैव गॉट द सेंटर. सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? रेडियस. रेडियस कैसे आएगा? वही सेम लॉजिक. रेडियस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. रेडियस कहां से आएगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. ये डिस्टेंस बोलो ना, ये डिस्टेंस, दिस मच डिस्टेंस इज व्हाट? 2r. दिस मच डिस्टेंस इज व्हाट? 2r. तो 2r इज बेसिकली मॉड ऑफ c1 minus c2. c1 क्या है? c1 minus c2. 10 minus minus 3. ठीक है ना? c2 minus c1 भी कर सकते हो. वी आर टेकिंग मॉड्यूलस ना. तो 10 minus minus 30 divided by root over of a square plus b square, provided a and b are the same. 16 plus 9 कितना आ रहा है? 2r is basically 40 upon 5 8. r क्या होगा? 4. रेडियस क्या होगा? 4. ठीक है ना? रेडियस क्या है? 4. So if radius is 4, so definitely what we can do now? Center आ गया, radius आ गया, so definitely we can find the equation of the circle. Therefore equation of circle is x minus, center क्या होगा भाई? center is x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square is equal to r square on a 16. बताओ clear? Clear with this question?
So here you are getting a unique center because of this statement. Because of this statement, the center lies on 2x plus y is equal to 0. That is why we are getting a unique center here and a unique circle. For a unique center, we have a unique circle. ठीक है. हाँ, we have also verified the short trick also. वो बोला तो मैं, I have verified the short trick. Anyways, चलो आ जाओ next. Find the equation of the circle whose center is 4, 3 and the touches the line 5x minus 12y minus 10 is 0. A very simple question. बहुत ही फालतू क्वेश्चन है. यहाँ पे आ गया. Find the equation of the circle whose center is 4, 3. तो we have a circle whose center is at 4, 3 and this is touching the line. Touching the line माने tangent है. Touching the line 5x minus 12 minus 10 is equal to 0. सेंटर तो है ही, रेडियस चाहिए. रेडियस कहां से आएगा? दिस लेंथ विल गिव द रेडियस. और ये लेंथ क्या है? परपेंडिकुलर है. सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज दिस मच लेंथ. याद है? डू यू ऑल रिमेंबर हाउ टू फाइंड? पॉइंट लेके यहां पे डाल दो, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रिमेंबर, यस और नो? फॉर्मूला. सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए. रेडियस कहां से आएगा? रेडियस विल बी mod of 5 into 4 minus 12y था ये, सॉरी 12y minus 12 times of 3 minus of 10 divided by root over of a square plus b square. माने 25 plus 144 169 13 होगा नीचे. तो ये क्या होगा? 20 minus of 36 minus of 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13. नाउ सिंप्लीफाई, जो भी होगा भाई, ठीक है ना. हाउ मच इज दिस? 36 minus 10 46. 46 minus of 20 माने 26. So 26 upon 13. R is how much? 26 upon 13. So what is radius? Radius is 2. R is 2. तो ये रेडियस 2 है. रेडियस आ गया, सेंटर भी है, तो x minus 4 होल स्क्वायर plus y minus 3 whole square is equal to r square. 2 square 4. This is a very bekar question which you are doing so far as compared to the questions what we have done. हो गया? लिख लिया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question saying? Find the image circle of x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0 in this line. ये क्या है? Find the image circle. Image circle of this circle about this line. माने we have a circle first. What is this circle? We have a circle whose center is given. Some center we are having. What is the center? ये सेंटर बोलो क्या होगा? 3, 4. हाँ या ना? ठीक का सेंटर 2 into -3. हाँ -3 तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बिल्कुल 3, 4. सो वी हैव अ सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इमेज सर्कल ऑफ दिस सर्कल. इमेज सर्कल का सर्कल तो वो भी सर्कल ही होगा, है ना. सर्कल का इमेज इज अ सर्कल ओनली. इफ यू टेक अ सर्कल एंड सिंपली टेक इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो तो सर्कल ही होगा, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द इमेज सर्कल ऑफ दिस अबाउट द लाइन 3x plus 4y. 3x plus 4y plus 25 is equal to 0. ठीक है ना. अब जितना इमेज ये होगा उतना इमेज मींस वॉट एवर इज दिस डिस्टेंस, द सेम डिस्टेंस विल बी हियर ऑल्सो. ठीक है ना. यहां पर भी सेम डिस्टेंस भी होगा. ये जो सर्कल है, इमेज भी सेम डिस्टेंस पे होगा. इमेज विल बी ऑल्सो एट अ सेम डिस्टेंस. ठीक है ना. Image will be also at a same distance, right? Okay. तो क्या करें? ये तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा ही. To find the equation of the circle, to image, find the image circle माने we have to find the equation of the image circle.
उसके लिए आपको सेंटर चाहिए होगा, रेडियस भी चाहिए होगा। अब देखो रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस विल रिमेन द सेम, वॉट एवर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल द सेम थिंग विल द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इतना तो पक्का है, ठीक है। ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ ये भी सेम होंगे, ठीक है ना। अब बोलो रेडियस कहां से आएगा, रेडियस, रेडियस विल बी द सेम, क्योंकि सर्कल द साइज ऑफ द सर्कल वोंट चेंज, साइज विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो ये बोलो क्या होगा, व्हाट इज दिस, रेडियस बोलो, रेडियस बोलो जल्दी जल्दी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस बोलो जल्दी से, कैलकुलेट एंड टेल मी द रेडियस। रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ऑफ सी, सी बोलो तो सी तो है ही नहीं, जीरो है, अरे सी जीरो है भाई। तो 3 स्क्वायर माने 9 प्लस 16 माने रूट ओवर 25 माने 5, ये तो 5 है, रेडियस तो 5 है, माने ये रेडियस भी 5 है। चलो रेडियस आ गया, रेडियस आ गया। सेंटर कहां से आएगा, सेंटर इज बेसिकली इमेज ऑफ 3,4, पूरा तो इमेज हो जाएगा। वी नो द फॉर्मूला फॉर इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। आपको अगर याद होगा फॉर्मूला, सिंपली यूज द फॉर्मूला एंड सिंपली फाइंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ठीक है ना, कर पाओगे आगे। ये जो होगा व्हाट इज दिस, दिस पॉइंट इज इमेज ऑफ 3,4, इमेज ऑफ 3,4 अबाउट दिस लाइन 3x प्लस 4y प्लस 25 इज 0। इमेज याद है, हाँ याद है, h माइनस समथिंग बाई ए, इमेज को मान लेते हैं h के, ठीक है, h माइनस समथिंग बाई ए क्या है 3 इज इक्वल टू k माइनस समथिंग बाई b, b क्या है 4 इज इक्वल टू a अल्फा, नहीं माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना, ये तो करते थे, ए टाइम्स ऑफ। अब क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू, नेक्स्ट सिंपली टेक द पॉइंट 3,4 एंड पुट इट ओवर हियर, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 25। और यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, जिसका इमेज चाहिए 3,4 माने 3 एंड 4, h माइनस 3 एंड 4, तो जो भी था, आई थिंक द फॉर्मूला वाज बेस्ड ऑन अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, x1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए, याद है ना, x1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए, फिर y1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई बी। चलो यहाँ पे आया, आई हैव टेकन h एंड k, जो भी हो, दिस वाज द फॉर्मूला। नाउ सिंपली सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k, आगे कर लोगे ना आगे, सॉल्व द वैल्यू ऑफ h एंड k, सॉल्व फॉर h एंड k, ये कर लेना प्लीज, सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। आफ्टर फाइंडिंग h एंड k, व्हाट इज h एंड k, सेंटर, सेंटर आ जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग सेंटर वी हैव रेडियस, नाउ वी कैन डेफिनेटली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हो जाएगा वहां से। चलो आगे चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आ जाओ जल्दी से, नाइस क्वेश्चन, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से। जेईई मेंस 2023, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले क्वेश्चन देखो। कंसिडर अ सर्कल, वी हैव वन सर्कल, लेट इट्स मिरर इमेज in the line y is equal to 2x plus 1 be another circle C2, ठीक है ना। तो we have a circle C1, एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C1 है, and the circle is getting reflected along the line, which line, 2x plus y is equal to 2x plus 1, ठीक है। after getting reflected the circle is getting formed over here, one more circle is getting formed over here at the same distance, जो भी होगा just similarly just like the previous question, let r be the radius of C2, find alpha plus r, अल्फा माने यहां से एंड आर कहां से आएगा, आर, आर इज द रेडियस ऑफ C2, तो रेडियस ऑफ C2 कहां से होगा, रेडियस ऑफ C2, रेडियस ऑफ C2 इज द सेम एज रेडियस ऑफ C1, लेकिन रेडियस ऑफ C1 कहां से आएगा, टू फाइंड रेडियस ऑफ C1 वी नीड टू फाइंड व्हाट इज अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट के जगह पे इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट दे हैव गिवन अल्फा माइनस 5, सो मेनी थिंग्स दे हैव गिवन, है ना। वन बाई वन, पहले तो सेंटर बोलो, पहले तो सेंटर बोलो, सेंटर ऑफ C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, पहले सेंटर बोलो, सेंटर ऑफ C1 इज हाउ मच, व्हाट इज द सेंटर ऑफ C1, 2,1,
मानते हो कि नहीं? 2,1, सेंटर ऑफ C1 इज 2,1। चलो ठीक है। अच्छा फिर बोलो सेंटर ऑफ C2, ये C2 है, C2 गिवन है। along the mirror image we are getting a C2 and C2 is they have given C2, कुछ ना कुछ तो दिया है। later on we can find the value of the remaining things, something they have given। what is C2 का सेंटर? -10F -10G, माने C2 का सेंटर इज F, G, F, G। क्यों? ध्यान से 5x² 5y², स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाओ। 5x² है तो x² + y²। यही तो मिस्टेक लोग, बहुत स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन दिस मिस्टेक। ठीक है, -5fx, ठीक है चलेगा ना? सॉरी, -2fx, -2fx, वी आर डिवाइडिंग बाई 5, सो -2fx, ठीक है। और फिर -2gy + 36, नहीं +36 नहीं, +18 + 36/5, वी आर डिवाइडिंग बाई 5, सो 36/5 + 36/5 इज इक्वल टू 0। हाँ, पर्पस दैट इज दे हैव गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू, just to confuse you। You have learned the formula x² + y² + 2gx + 2fy। just to confuse you they have given 10fx and 10gy। they have given, along with x they have given f, and with y they have given g। ठीक है, ये तो confusion है, just they have confused you। so what is the center now? The center is what? Center is f, g, f, g। ना कि 5x का वो जो आप बोल रहे थे 5x 5f 5g, वो नहीं है। द वन विच यू वर सेइंग अश्मित, 5x 5g, f, g इज द सेंटर। ठीक है ना? चलेगा। एंड व्हाट इज एफ जी? एफ जी इज द इमेज ऑफ 2, 1। जानते हो ना? जस्ट नाउ वी हैव सीन सिमिलर प्रॉब्लम। एफ जी इज द इमेज ऑफ 2, 1। सर रेडियस कहां से आएगा? हाउ विल वी फाइंड आउट रेडियस? रेडियस तो आपको वही से आएगा, मतलब रेडियस, टू फाइंड रेडियस, मतलब टू फाइंड द रेडियस वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर। ये तो एक फैक्टर है। डू वन थिंग फर्स्ट, फाइंड this fg first। if you find fg, because radius is what? Radius is the radius of C2 ना, C2 दिया पास तो C2, तो radius of C2 and radius of C1 वो तो सेम रहेगा। खुद सोचो, if radius of C2 आपने निकाल लिया, if you find out the radius of C2, ठीक है, तो using the formula we can equate the two radiuses and solve for alpha from there। सोचो what I'm trying to say। पहले आप एक काम करो, first you find out this f and g। let's find what is f and g। जल्दी बोलो what is f and g? fg, this coordinate center is basically the center of this C2 is the image of 2, 1। ठीक है, I think the formula was given in this way ना, x1 minus alpha upon a, ठीक है, and then y1 minus beta upon b is equal to minus of 2 times of a alpha plus b beta plus c upon a square plus b square। यही तो था फॉर्मूला, a square plus b square। I think previously I have taken root over of a square plus b square। ये रूट नहीं आएगा शायद, previously I have taken by mistakenly I have taken root over of a square plus b square। ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे। तो next we see from here a alpha plus b beta plus c divided by a square plus b square। अच्छा, so what is x1? x1 y1, x1 y1 माने जिसका इमेज, जो इमेज है, जो इमेज है, जिसका नहीं, जो इमेज है, जो इमेज है माने दिस इज x1 y1, this is x1 y1, this is x1 y1। the image, that is the image we are supposed to solve for। what is alpha beta? जिसका image, the one whose image we are supposed to solve for, that is alpha beta। ठीक है ना? now put this one by one। also we must rewrite this equation into ax plus by form। ax plus by plus c is equal to 0। अब रखो रखो यहाँ पे रखो, जल्दी से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। f माइनस व्हाट इज x1? x1 इज f माइनस अल्फा, f माइनस यहाँ पे g माइनस, ठीक है, और समथिंग समथिंग माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग। ठीक है,
f minus alpha, f minus alpha. What is alpha? Alpha is 2 comma 1. Alpha is 2 comma 1, माने सॉरी 2. g minus beta 1. a क्या है? What is a? a is यहां से ax plus by, तो a is what 2, b is what minus 1. ठीक है ना? ये क्या होगा? a अल्फा प्लस b बीटा. a अल्फा माने कौन सा पॉइंट कहां पे रखोगे? लाइन पे ये पॉइंट रखोगे. ऑन द लाइन यू विल पुट अल्फा बीटा. दिस पॉइंट 2 1. लाइन पे जो गिवन पॉइंट है वो लाइन पे रख दो बस. गिवन पॉइंट, सिंपल थिंग. सो 2 into 1, 2 into 2 माइनस 1. ठीक है, 1 प्लस 1. ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर. नाउ हाउ मच इज दिस? f minus 2 by 2 is equal to g minus 1 upon minus 1 equals to minus of 2 times of 4. ये minus 1 plus 1 cancels out. 4 into minus 8 बनेगा, minus of 8. ठीक है ना? 4 times of minus 2 माने minus of 8. minus 8 divided by 2 square plus 1. 4 plus 1 5 minus of 8 by 5. तो f minus 2 डायरेक्टली f कर दो. f minus 2 is minus of 16 upon 5. ठीक है ना? तो what is f? f is 2 minus 16 upon 5 है ना? 2 minus 16 upon 5 माने minus of 6 upon 5. f is minus 6 upon 5. g बोलो. g क्या है? g जल्दी जल्दी. g is what? g minus 1. यहां से g minus 1 is 8 by 5. तो g is how much? g is 13 by 5. ठीक बोला ना? 13 by 5 है. Minus of 6 by 5. So we have got this point. We have got this point next. So we have got this point. ये point आ गया. क्या point है? This point is minus of 16, minus of 6 by 5. Sorry, minus of 6 by 5, comma minus of 6 by 5, comma 13 by 5. ठीक है? माइनस ऑफ 6 by 5 कॉमा 13 by 5. चलेगा? क्लियर है? सेंटर आ गया C2 का. तो वी हैव गॉट द सेंटर ऑफ C2. कैन वी नाउ फाइंड द रेडियस नेक्स्ट? कैन वी नाउ फाइंड द रेडियस? नाउ बिकॉज द टू सर्कल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो द टू रेडियस विल बी आल्सो द सेम. मानते हो कि नहीं? कैन वी फाइंड द रेडियस नेक्स्ट? रेडियस आपको यहां से मिल जाएगा. रेडियस ऑफ C2. Radius of C2 is how much? Radius R. Because R is the radius of C2. R will be how much? Root over of G square. माने this 36 by 25 plus ये कितना है? 13. 169 divided by 25. ठीक है, और माइनस R माइनस C. माइनस C बोलो तो C कौन सा C है? माइनस C माने ये C. G square plus F square माइनस C. 36 by 5. ये नहीं है, 36 नहीं है, 36 by 5 है. ठीक है, 36 by 5 है. बोलो कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस? जल्दी बोलो, कोई एक बोलो. व्हाट इज द रेडियस? जल्दी बोलो. व्हाट इज द रेडियस? 36 plus 169 minus of 36 divided by 5. Make the LCM same. Make it to be 25. ठीक है ना? Make it to be 25 and 36 times of 5 बोलो कितना होता है? आई थिंक 180 आएगा ना? मेक इट टू बी 180. मेक इट टू बी 180. मेक इट टू बी 180. अच्छा, सो 169 प्लस 36 बोलो कितना आ रहा है? 169 प्लस 36 माइनस 180. 169 प्लस 36 आई थिंक इज 205 और यहां पे माइनस ऑफ 180. माइनस ऑफ 180 तो 25 आएगा. 25 रूट ओवर ऑफ 25. ये तो सिंपल हो गया. देखो, रूट 25 by 25. लो, रेडियस 1 आ गया. वी वर सर्चिंग फॉर सिंपलर वैल्यूज, वी आर गेटिंग सिंपलर वैल्यूज. चलो, दे हैव मेड हैप्पी. है कि नहीं? आर इज रूट ओवर ऑफ 25 by 25. 1 आ गया ना? आर इज 1 है ना? हाँ, R1 आ गया. देखो, वी आर गेटिंग अ सिंपलर वैल्यू नाउ.
चलो R1 आ गया, तो नेक्स्ट 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 क्या करे, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ R to be 1, नेक्स्ट क्या करे, जल्दी बोलो। रेडियस को सेम बना दो, रेडियस को, अरे रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल इज हाउ मच, रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल, सिमिलरली रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल को सेम बना दो, ये तो कांस्टेंट ही है ना, जी स्क्वायर। अरे ये देखो, ये जो है रेडियस को आप कांस्टेंट बना दो, रेडियस को, रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल इज हाउ मच, रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ C1 एंड रेडियस ऑफ C2 विल बी द सेम बिकॉज द टू सर्कल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अल्फा भी तो चाहिए बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर व्हाट इज अल्फा प्लस आर, तो रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, फर्स्ट सर्कल सॉरी, रेडियस बोलो, रेडियस, रेडियस ऑफ C1 रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, C1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो जी स्क्वायर क्या होगा, जी स्क्वायर माने 4, राइट, 4+1, मानते हो कि नहीं, माइनस प्लस छोड़ो वो तो जो भी है, माइनस स्क्वायर इज ये स्क्वायरिंग ओनली, जी स्क्वायर है ना, 2 into 2, 2 into -2, तो -2 होल स्क्वायर 4 प्लस 2 into 1, 1, फिर यहां पे माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ 5 माइनस अल्फा, टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या बनेगा 5 माइनस अल्फा, मानते हो ना, 5 माइनस अल्फा, तो 5 माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो फ्रॉम हियर यू सॉल्व फॉर व्हाट इज अल्फा, ये बनेगा 5, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना 5, देखो और सिंपल हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, क्या बनेगा अल्फा, अल्फा इज बेसिकली व्हाट 1, अल्फा इज 1, सो एज R 1 + 1 2 इज द आंसर, फाइनल आंसर इज 2, रिसेंट ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर ओनली, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे, देखो सम स्टैंडर्ड सर्कल, मेक अ नोट ऑफ दिस, सम स्टैंडर्ड सर्कल, circle touching the x-axis, these are some positions of the circles, these are some scenarios, ठीक है, you don't need to remember this or kind of thing, these are quite obvious, some standard circles, लिखो जल्दी से, first circle is circle touching the x-axis, we have the x-axis like this, okay, we are going to see the radius and center for each of these circles, each of these scenarios, first case number 1, क्या बोल रहा है, circle touching the x-axis, लिखो केस नंबर 1 इज सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, वेरी सिंपल, इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली this point will be something let's say around a,0 definitely on the x axis, y coordinate is 0, so this point is something a,0, ठीक है ना, कोई सा भी रैंडम सर्कल है, एनी रैंडम सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो along the x axis means your travel a units, मान लो सपोज ये कोई एक सर्कल है, ये मान लो सपोज y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, तो वी हैव अ सर्कल, जस्ट अ सर्कल, रैंडम सर्कल टचिंग द x एक्सिस, तो along the x axis you must have traveled a units, if this is a units, so as this much, this is also a units, मानते हो कि नहीं, ये भी तो a units है, तो सेंटर इज व्हाट a,0 बिकॉज along the y axis you are traveling, ठीक है ना, along सॉरी a,r होगा, a,r, ये क्या है, रेडियस है ना, a,r, a,r, व्हाट इज r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, so what is the center in this case, a,r, you don't need to remember this thing, these are quite obvious things, खाली scenarios देख लो क्या होगा, just see the scenarios. Next, similarly we have the circle touching the y axis, we have a circle which is touching the y axis, यहाँ पे मान लो x axis है and we have the y axis like this, circle touching the y axis, अगर y axis पे टच करे तब सेंटर क्या होगा, I said that always we are going to discuss what is the center and the radius, ठीक है, अच्छा ये तो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, तो along the x units you are traveling, अच्छा ये कोऑर्डिनेट बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, 0,b मान लो, 0,b, ठीक है, एक को अगर ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन a,0, सो टेक इट टू बी 0,b, 0,b से यू आर ट्रैवलिंग r यूनिट्स फर्दर, है ना, तो x coordinate will change only, x coordinate will change it to what, b will remain the same, y will remain the same, because you are traveling along the y axis, along means along this line y is equal to b, so this will become what, r comma b, this will become what, r comma b, समझे होगा, ठीक है ना, क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट,
circle touching the x-axis at the origin. Now see, circle touching the x-axis at the origin. So consider this yellow circle. Can you see that this circle is touching the x-axis at the origin? ठीक, x-axis पे टच करेगा, but this is touching at the x-axis at the origin. ठीक है, ध्यान से देखो. So in this scenario, we are getting, ये center है, center is lying on the y-axis. मानते हो ना, center is lying on the y-axis. तो ये रेडियस है, ये r मान लो, सपोज दिस इज r, and you are, the center is lying on where? On the y-axis. On the y-axis, x coordinate is 0, so 0 comma, how much you're traveling? r units ऊपर, तो 0 comma r is the center. रेडियस r है और सेंटर क्या है? 0 comma r. अच्छा, वन मोर केस इज पॉसिबल, नीचे भी तो हो सकता है, नीचे, लाइकवाइज दिस पिंक सर्कल, नीचे भी हो सकता है दिस पिंक सर्कल. तो नीचे होगा तो नीचे जाओगे, सेम यूनिट्स नीचे. So here center is possible. Once again, center is lying on the y-axis. Center is lying on the y-axis. तब क्या होगा? 0 comma r नहीं, minus r. Minus r because you are going r units downward. Coordinate wise, distance wise, it is r units. But coordinate wise, you have to give the coordinate, right? The coordinate wise is what? 0 comma minus r. एक और possibility है कि circle touching the y-axis at the origin. Circle touching the y-axis. Now the circle will touch the y-axis at the origin. Look at the yellow circle. Look at the yellow circle over here. ये कैसा जा रहा है? ये रेडियस ये होगा. This is the radius. This is the radius. ये रेडियस मान लो. ये सेंटर है. ये रेडियस है. What is the radius? r, 0. सेंटर क्या होगा? r, 0. क्यों? x एक्सिस है. x एक्सिस है. x एक्सिस पे सेंटर क्या होगा? कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? 0. x coordinate is you're traveling x units, so r is changing, x is changing, so what is x? X is r only, r, 0. Similarly towards the left hand side also, this much if you travel the same amount of units towards the left hand side, ये भी r होगा तो ये भी r होगा, both of these are r, but this is coordinate wise, this will be what? Minus r, 0, because coordinate wise you have to take the negative values of r, है ना? You have to take the negative x because they're in the, you're in the left hand side, negative side of the x axis, so definitely you have to take negative values of x, so minus of r, 0. बस यही है, बेसिक चीज है. ठीक है, you don't need to remember these, all of these things. ये क्या है? ये कुछ obvious चीज है, obvious things, obvious points. फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, सर्कल टचिंग x axis at the origin. अब देखो, सर्कल इज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. Circle is touching the x-axis at the origin. Circle touching the x-axis at the origin. देखो कैसे जाएगा. The circle touch कैसे हो रहा है? सर्कल x-axis पे टच हो रहा है. अच्छा एक सेकेंड, ये सर्कल टचिंग दी x-axis नहीं होगा, गलत लिखा है, हेडिंग इज रॉन्ग. ये सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस होगा. दिस इज सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस. ये हेडिंग यहाँ पे कॉपी हो गया, ये हेडिंग रॉन्ग है. दिस हेडिंग रॉन्ग. सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस. चेंज द हेडिंग इट टू सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस. हेडिंग ही रॉन्ग है यहाँ पे. Circle touching, the figures are, you can see the figures, right? Just now we have done this topic, circle touching the x-axis at the origin. Circle touching both the axis लिखो. Printing mistake. Circle touching both the axis. आ जाओ भाई, क्या होगा? Circle touching both the axis. Look at this circle for the first one. ठीक है, 4 such cases are possible. 4 such cases. या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टच हो जाए, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे. फॉर 4 quadrants we have 4 cases. Circle is touching both the axis. Look at this, it's touching both the axis. ऐसे टच हो रहा है, touching both the axis. ठीक है ना? हालांकि कोई बोलेगा कि सर देयर आर मेनी सच पॉसिबिलिटीज. हाँ, मेनी सच पॉसिबिलिटीज. आई हैव टेकन वन ऑफ द केसेस. मेनी सच पॉसिबिलिटीज. यही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर आर मेनी सच केसेस. A family of circles can be generated, you know, many such cases. मान लो अगर कोई एक सर्कल, there is a bigger circle, likewise yellow circle, there is a bigger circle like this which is touching the both the axis in this way. ये भी तो हो सकता है. likewise many such circles are possible. ये तो कोई एक लौता सर्कल है नहीं, मैंने तो नहीं बोला. This is just one of the case we are supposed to see. Anyways,
अभी देख लो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लेते सपोज दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द सेंटर, सेंटर क्या होगा, ये आर होगा, तो ये आर होगा, तो व्हाट इज द सेंटर, सेंटर इज आर कॉमा आर, मानते हो ना, सेंटर क्या होगा, आर कॉमा आर। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो, लेकिन लेकिन ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, तो व्हाट इज द सेंटर, सेंटर इज माइनस आर कॉमा आर। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे एक्स नेगेटिव है, ठीक है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट वाला कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो रहा है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे बोथ ऑफ दीज आर नेगेटिव, माइनस आर का सॉरी सेंटर है, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर इज माइनस आर का माइनस आर। एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा, y पॉजिटिव, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेगेटिव। सो इफ दिस इज r एंड इफ दिस इज r, तो ये क्या होगा, सेंटर, सेंटर विल बी माइनस ऑफ r कमा r, राइट, नहीं सॉरी, r कमा माइनस r, r कमा माइनस r, मानते हो कि नहीं, चलेगा, बस यही है। These are some scenarios. So you can see, if somebody asks you the question, how many circles are possible if the circles are touching both the axes, you will say 4 circles. 4 circles. In general, 4 circles are possible. Halaki more circles are possible because you know there are many circles which can generate. Depends upon the condition. But in general, 4 circles are possible for 4 quadrants. Now, in a single quadrant, there can be many such circles depending upon the condition what they are given. ठीक है ना? In all of these 4 cases, you can see that the circles are touching both the axes. टचिंग बोला है, टचिंग बोथ दी एक्सिस, ठीक है ना। चलो इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।